Hello and welcome. Welcome to the weekly analysis of Nifty and key stocks of Nifty with MJ. Friends, आज है 12th December and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with a trading plan and investing opportunities in Nifty and 10 key stocks of Nifty for 14th December, that's Monday when the market will open and the entire week ahead. Well, friends, if you are new to our YouTube channel, do consider subscribing to our channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get a notification. And of course, be generous to share the video with your friends and trading communities who can be equally benefited from quality analysis and knowledge. By sharing the knowledge, friends, it reflects your generosity, and by sharing the knowledge, you also enhance your own knowledge. Let's look at Nifty and Bank Nifty daily chart, friends, just to have a look at how Nifty and Bank Nifty have performed in the last week since we created last weekly analysis of Nifty, right? And Bank Nifty also. Bank Nifty will be coming in a separate video. In this video, we'll only be talking about Nifty and 10 key stocks of Nifty. अगर हम फ्राइडे की बात करें फ्रेंड्स, तो फ्राइडे मार्केट गैप अप स्टार्ट हुई एंड फर्स्ट हाफ में इनफैक्ट अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बनाए रखा बुल्स ने, बट जैसे ही अराउंड 1130 पे अपना यूरोपियन मार्केट स्टार्ट हुई फ्रेंड्स, इन यूरोपियन मार्केट्स वी सॉ द profit booking and sell off, and that's what precisely picked up by our market as well. And you could see a large candle with a huge size of wicks on up or downside, right? So Nifty as well as Bank Nifty में वही देखने को मिला हमको फ्राइडे, बट जब भी मार्केट लास्ट के 1.5 घंटे में क्लोज हो रही थी तो इट कवर्ड अप इनफैक्ट इट्स लॉसेस, बट ओवरऑल जो मार्केट की ब्रेड्थ रही फ्रेंड्स, दैट वाज न्यूट्रल टू नेगेटिव काइंड ऑफ. 26 stocks declined and only 24 stocks advanced from Nifty 50 stocks. अगर हम बात करें फ्रेंड्स टॉप कंट्रीब्यूटर की फ्राइडे को निफ्टी में, तो टॉप कंट्रीब्यूटर ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल एंड कोल इंडिया थे, अपार्ट फ्रॉम टाटा स्टील. एंड द टॉप लूजर्स वर एक्सिस बैंक, डिवीज, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड आयशा मोटर. सो अगर हम निफ्टी की प्राइस एक्शन को देखें तो निफ्टी की जो प्राइस एक्शन है, दैट शोज निफ्टी क्लोज्ड विद 13,514 at 13,514 with a net gain of 35 points. Previous day there was a loss of 51 points, right? तो हमने लास्ट वीक में जब भी फ्राइडे को ये वीडियो रिलीज की थी फ्रेंड्स, वी हैड इनफैक्ट थर्सडे को जो वीडियो रिलीज किया था फ्राइडे के लिए, हमने कहा था कि 13,300 से 13,650 की रेंज में हाई वॉलेटिलिटी के साथ में मार्केट रहेगी. हाई वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली, एज वेल द निफ्टी प्रिसाइजली उसी रेंज में ट्रेड कर रही थी, राइट? तो इस टाइप का एनालिसिस फ्रेंड्स हम देख के करते हैं प्राइस एक्शन पे, जो कि पास्ट के प्राइस एक्शन है, एंड टेक्निकल एनालिसिस, सम सर्टेन पैरामीटर्स व्हिच ऑफ कोर्स विल बी डिस्कसिंग इन दिस video as well at the end of the session when we are looking at intraday opportunities in Nifty. तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि किस टाइप का ट्रेंड इमर्ज हो रहा है निफ्टी में. ऑल्दो ये जो फ्राइडे की कैंडल है, यू वुड सी दैट दिस कैंडल इज लार्जर, स्लाइटली लार्जर देन प्रीवियस 2 कैंडल्स. सो एक टाइप से आउट कैंडल कंसोलिडेशन चालू है निफ्टी में. निफ्टी ने हायर हाई एंड हायर लो बनाया है, दैट ऑल्सो शोज निफ्टी में अप ट्रेंड की मोमेंटम है, बट एट द सेम टाइम certain technical parameters are not supporting it, right? So jo candlestick bani hai, that's called long legged doji, and again indecisive candle hai. Previous day you saw that it made a dragonfly doji again, although bullish bias thi jo ki humko next day दिखाई भी दी, लेकिन momentum supportive नहीं था यहाँ पे, right? Price action perspective से अगर निफ्टी डाउन साइड में जाती है फ्रेंड्स, so you will see 13,500 हमारा एक लेवल ऑफ सपोर्ट है, जो कि हमारा पहला लेवल ऑफ सपोर्ट आएगा. सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट है 13,450 पे, थर्ड लेवल सपोर्ट है 13,400 पे, एंड फोर्थ लेवल है 13,356 पे. सो 13,356, राइट? तो 13,356 हमको डाउन साइड में रेंज दिखाई दे रही फ्रेंड्स. लेट मी करेक्ट दैट, राइट? Let me jot that down.
for you so that आपके reference में ये रह जाए. Otherwise, आप you can also note that in your respective notepads also. So 13,000. Okay, so this is not, like the writing instrument is not functioning that well. So 13,356 on downside. And अगर निफ्टी में बाइंग आती है मंडे को तो 13,548 हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है. सेकंड रेजिस्टेंस है 13,578 पे, जो कि हमारा फ्राइडे का हाई भी है. उसका जो नेक्स्ट लेवल है दैट्स 13,600. दैट इज अ साइकोलॉजिकल level. 13,650 and 13,700 are on the upper side. So 13,600 we can say that upper side में हमारी range रहेगी. 13,650 you can say the fourth level, right? तो ये हमको एक ट्रेडिंग रेंज फ्रेंड्स नजर आ रही है जो कि मंडे के लिए वैलिड होगी. अगर हम वीकली की बात करेंगे, वीकली रेंज वुड बी मच डीपर. लेट मी सी इफ इट is. Yeah, so still it is not functioning, friends. So let me rather stop writing on it, right? So that's the trading range for Nifty on upper or lower side. I will of course be seeing from data perspective whether this trading range is syncing with the data or not. But before that, let's see the key stocks of Nifty वो कैसे perform किए last week में, right? So for that we will see the first constituent, which is Reliance, which is heaviest weight on Nifty 50 stocks, right? तो Reliance का जो performance है, friends, we are seeing that for many weeks Reliance has been in a corrective mode, right? So the news flow was not in favor of Reliance, although there was a positive news flow as well. However, it remained in the grip of bears, right? And Friday इसने काफी up move दिखाने की कोशिश की, right? However, again, that up move was thwarted, right? So you can see that there is a this new trend line. हालांकि जो डिसेंडिंग चैनल था that has been broken, and अभी भी रिलायंस असेंडिंग चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, बट इट हैज गॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन हियर. ये जैसे ही 50 डेज के मूविंग एवरेज के नजदीक में जाता है, फ्रेंड्स, इमीडिएटली यहाँ पे सेल आउट चालू हो जाता है. सो रिलायंस के लिए क्रूशियल है 50 डेज का मूविंग एवरेज विच इज कमिंग 2024. अगर 2024 के ऊपर डिसाइसिवली ये जाता है तो रादर 2100 के ऊपर अगर बात करें तो यू वुड सी रिलायंस अगेन गेनिंग द मोमेंटम. अदरवाइज ये इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करता रहेगा, राइट? एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स भी इसके बहुत पॉजिटिव यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, राइट? सो नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स भारती एयरटेल, और ये हमारी रनिंग कमेंट्री चलते रहती है. हर स्टॉक को, ये 10 स्टॉक को फ्रेंड्स हम हर हफ्ते रेगुलरली एनालाइज करते हैं, इसके टारगेट्स देखते हैं, और पिछले वीक की परफॉर्मेंस को भी हम देखते हैं यहाँ पे. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज स्टॉक्स और टारगेट्स, फ्रेंड्स, इट इज नॉट माय रिकमेंडेशन फॉर यू टू बाय. डू consult your financial advisor who can give you buying and selling advice. I'm only discussing all these stocks for the educational purpose, right? So I may be invested, I may not be. Stock market is a risky business, and you should learn this business properly if you want to make substantial money from this market. Now Airtel के लिए हमारी, sorry, भारती एयरटेल के लिए हमारी जो कमेंट्री रही है फ्रेंड्स, ये डिसेंडिंग चैनल में था, और मैंने काफी टाइम आपको बोला था जब ये अराउंड 400 के लेवल पे आया था तो अपनी बात हुई थी कि वी शुड गो लॉन्ग, एंड अराउंड 503 का हमने टारगेट दिया था. 503 का टारगेट अचीव हो गया है. 529 529 इज नेक्स्ट टारगेट. हाउएवर दिस trend line will keep on stopping it, right? So it may move slowly. However, you need to have a patience in Bharti Airtel now, right? So you can still be bullish if you have already taken a position, but keep a stop loss here. अगर मार्केट में थोड़ा भी कमजोरी आएगी तो आपको एयरटेल में भी कमजोरी देखने को फ्रेंड्स मिलने वाली है. So in such a case, then you should protect your profits if you are already in profit. The next stock we always discuss is the ITC, friends. ITC, we've been bullish from the level of 161 or 62, and my running commentary had been that this is a value stock,
and over a period of time you would see value will be unlocking. Now इसने एक बहुत बड़ा जोन जो कि पोस्ट कोविड की जो पोस्ट कोविड इवेंट जो थी उसके बाद में ये एक हाई बनाया था इसने ऑलमोस्ट 208 209 रुपए का, वो वाला जोन जो कि स्ट्रगल कर रहा था आईटीसी, वो जोन डिसाइसिवली इसने तोड़ दिया है विद ह्यूज वॉल्यूम्स, एंड इसके टेक्निकल पैरामीटर अभी भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था ये डायवर्स बॉक्स में, वो टाइम पर थोड़ा इसके यहाँ पे क्रॉसओवर होने की कगार पे था ये, और वॉल्यूम buying strength कमजोर हो रही थी, but now it has got the good momentum. So 235 is our target for ITC at this point of time, and 235 के बाद में 250 will be our next target for ITC. So bullish momentum ITC में बना हुआ है. Even we feel that when the market would go down, ITC may continue its momentum to recover the lost glory which it was having. In fact, at least प्री कोविड के टाइम की जो है या 2019 की जो इसकी प्राइसिंग है वहां पे भी आईटीसी आना चाहिए. नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड्स, लेट्स लुक एट एशियन पेंट. एशियन पेंट वी हैव बीन बुलिश फॉर in fact I would say forever, right? Bullish Asian Paint में, but despite being very expensive stock from the price valuation perspective, you would see Asian Paint would keep on rising for the very special mood of this stock, right? तो लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो वी वर समवेयर अराउंड 2300 के लेवल पे थे. 2300 के लेवल पे हमने बात की थी 2465 के टारगेट की, जो कि पिछले हफ्ते में अचीव हो गया है. उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2680 का फ्रेंड्स. तो इट्स मूविंग टुवर्ड्स दैट टारगेट. सो इफ यू आर इन प्रॉफिट, स्टॉप लॉस आपका ट्रेलिंग करते जाएं ऊपर की तरफ और स्टॉक में आप बने रह सकते हैं, राइट? अभी एशियन पेंट के बाद में फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो रहता है वो है टाइटन. टाटा ग्रुप का अच्छा स्टॉक है, और सिंस द टाइम शॉपिंग सेंटर्स वगैरह खुले थे, आई वाज बुलिश ऑन इट, एंड मेरे रनिंग कमेंट्री में आपने हमेशा जब भी मैंने ये स्टॉक को एनालाइज किया है, आई हैड सेड दैट कि भाई यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं एंड इट विल रिमेन इन अ बुलिश जोन, राइट? तो एक जोन के बाद में ये नेक्स्ट जोन तोड़ रहा है एंड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है. अगेन दिस बॉक्स वाज ब्रोकन लास्ट वीक, एंड उसके बाद में ये अभी कंसोलिडेशन के पैटर्न में है. बट जो हमने टारगेट किया 1440 लास्ट वीक में, वो अचीव हो गया. इसका 1475 नेक्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स, एंड 1475 के बाद में 1520 हमारा थर्ड लेवल का टारगेट है, जो कि ये पॉसिबली नेक्स्ट 2 वीक्स तक अचीव कर सकता है. अगर दिसंबर मंथ में सेल आउट होता है, एफआईआईज सेल आउट करते हैं, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इसमें पड़ेगा, क्योंकि एफआईआईज का भी ये एक फेवरेट स्टॉक है. बट ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे बुलिश बना हुआ है. दो स्ट्रेंथ कमजोर है, बुलिश मूव जो है थोड़ा कमजोर है, बट मोमेंटम तो बुलिश है. नाउ लुक एट मारुति सुजुकी. ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक है हमारे पास में, एंड इट वाज इन कंसोलिडेशन, करेक्शन एंड देन अप मूव, राइट? तो with that, individual, yeah, rather personal car consumption has increased post COVID, and we've been bullish with a target of 8500. हमारा 7950 का जो एक टारगेट था वो ऑलरेडी इसने अचीव कर लिया फ्रेंड्स, और हम यहाँ पे बुलिश थे करीब करीब 7100 के लेवल पे. दैट वाज द सेकंड कॉल वी हैड गिवन. आवर फर्स्ट कॉल वाज समवेयर अराउंड 6600 के आसपास, 6500 550 के आसपास हमारी ये पहली बुलिश कॉल थी, जब इसने मार्केट स्ट्रक्चर लो बनाया था पैटर्न यहाँ पे, राइट? तो मारुति की एक स्पेशलिटी की ये जब भी मूव करता है एक चैनल में मूव करता है, असेंडिंग चैनल में. तो अभी व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर दिस? हमारा 8500 का टारगेट अभी भी इसके लिए इंटेक्ट है, एंड वी आर बुलिश अबाउट मारुति. अगेन अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो यू वुड ऑल्सो सी मारुति में भी करेक्शन आएगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज मेकिंग अ ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैट ट्रायंगल. एक फ्लैग बना हुआ है जिसमें ट्रायंगल है, और यू वुड सी अ गुड अप मूव coming up in Maruti Suzuki in coming times, right? Now another automobile sector stock, Tata Motors. Tata Motors, again, we've been bullish, not because of the fundamentals have altered much, but because of the kind of price it was available at, right? तो हमने इसमें जो पोजीशन ली थी समवेयर अराउंड ये लेवल पे 140 के आसपास में अपनी रनिंग कमेंट्री हुई थी कि भाई 140 के आसपास से इसमें पोजीशन ली जा सकती है लॉन्ग,
एंड द टारगेट्स वर प्रीटी क्लियर. कुछ टारगेट्स इसके अचीव हो गए. 158 का एक टारगेट था, नेक्स्ट टारगेट 175 का था, और उसके बाद में 200 का इसका एक टारगेट है, राइट. इफ यू सी 250 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट इसका आई थिंक 200, 200 के बाद में इसका नेक्स्ट 250 का टारगेट है. सो द चार्ट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट एज ऑफ नाउ. लेट मी reset it. So 250 is the next target for Tata Motors. Now, Tata Motors may again witness selling pressure when the Nifty correction will happen. You need to have patience at that point of time in Tata Motors, friends. Tata Motors के अलावा एक TCS, वो भी Tata Group का stock है, friends. And TCS is from IT sector. And IT sector में हमने काफी almost more than a month we saw the profit booking, and not only profit booking happened in Indian IT sector, but it was visible in Nasdaq also, right? So मेरा running commentary था वो कि ये लेवल पे ये गैप फिल होने आएगा तो आप पोजीशन ले सकते हैं 2550 पे, लेकिन एक गैप फिल अप करने नहीं आया फ्रेंड्स, उससे पहले ही ऑलमोस्ट 2600 से रिटर्न कर गया. सो एज ऑफ नाउ इसने अच्छा बेस बनाया है 2600 पे. हाउएवर ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन में भी है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा आपको प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आएगी. अगर मार्केट डाउन साइड में खिसकती है तो यू वुड सी टीसीएस विल बी मेकिंग अप मूव, एंड 2960 इसका टारगेट है अपसाइड में पहला, एंड सेकेंड लेवल का इसका जो टारगेट है फ्रेंड्स, अगेन दैट इज अ लिटिल अपसाइड. आई थिंक 3200 का टारगेट है, एंड विद अ बायबैक ऑफर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ अटेंशन इज बीइंग गिवन टू TCS. So इसमें अगर आप हैं तो you can stay invested for a longer period of time. Short term के लिए शायद ये sideways और correction mode में रहे, right? Next जो stock हम लेते हैं friends वो भी IT sector का होता है, and that is Infi. So Infi में again एक bullish bias बना हुआ है, although Infi has become very very expensive at this point of time. So fresh position न लें. Of course अगर आप बने हुए हैं Infi में तो you can continue with your long position with a tight stop loss, right? So again market जैसे ही नीचे जाती, you might have observed that pharma and IT sectors keep on going up along with the dollar, क्योंकि जैसे डॉलर ऊपर जाएगा इनकी इनकम जो कि डॉलर में होती है वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देती. So all IT sector stocks right now are in this zone, जो कि एक accumulation और distribution zone के बीच में ये अटके हुए हैं, और these are doing consolidation. So you need to ensure that if you want to take a fresh position, 1190 के ऊपर fresh position breakout में बन सकती है यहाँ पे, but I would still say that there are more IT companies which are comparatively undervalued, and companies like SCL could be better option than this. Maybe in next video we'll pick up SCL also for analysis, right? So last stock of this series, friends, which we generally analyze is a Tata Steel. So let's have a look at Tata Steel. Tata Steel mein we have seen a double head and shoulder pattern, inverted head and shoulder pattern, friends, and from then we've been bullish on Tata Steel, and Tata Steel ने कई milestone जो हमने टारगेट के फॉर्म में दिए थे वो अचीव कर लिए. फ्रेंड्स, those of you who are regularly following us on YouTube or on our Facebook page, I'm sure you are already knowing our day-to-day commentary about these stocks, wherein not only we talk about investment, we also invest ourselves. ये थोड़ा दूसरा चार्ट लग गया फ्रेंड्स, आरसीएफ का चार्ट लग गया. आरसीएफ में भी इनफैक्ट आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट की कगार पे है आरसीएफ भी. लेट्स लुक एट टाटा Steel. Give me a minute, friends. Tata Steel is, where is this one? Is Tata Steel. Let me open Tata Steel का chart, right? So Tata Steel हमने Friday को of course इसमें थोड़ा up move देखा था, but Thursday I think Wednesday as well as Thursday दोनों दिन यहाँ पे profit booking हमको देखने को मिली थी, and that was healthy profit booking क्योंकि distribution zone में था, and you can see that Tata Steel has run up from 300 के लेवल से हमने बात किया था टाटा स्टील में लॉन्ग होने का, एंड तो वहां से ऑलमोस्ट 650 630 तक चला गया था. तो प्रॉफिट बुकिंग 4 दिन यहाँ पे दबा के हुई, बट अभी एक जो डिसेंडिंग चैनल है उससे ये तोड़ के बाहर निकल गया है और वापस से ये बुलिश जोन में जाने की कोशिश कर रहा है. 650 हमारा नेक्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स यहाँ पे. हाउएवर
निफ्टी 50 का स्टॉक है, अगर निफ्टी 50 में करेक्शन आता है, यू वुड विटनेस टाटा स्टील ऑल्सो फॉलोज द सेम काइंड ऑफ पैटर्न। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली अगर रहें आप, मे बी पार्ट प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं अराउंड 630, 640, 650 के आसपास में। नेक्स्ट टारगेट इसका 700 का है, और 700 के बाद में 750 का इसका नेक्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स, राइट। सो यू कैन, बट फ्रेश पोजीशन यहाँ पे नहीं बन रही है। करेक्शन के टाइम पर अगर ये 550, 560 के आसपास में आता है, देन यू मे फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी टू enter this stock, right? So before we get into the trading opportunity for Monday in Nifty and Bank Nifty, let's have a look at the kind of market scenario which is emerging worldwide, because that will be giving us the direction. अभी domestic cues हमारे पास में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगर मार्केट हमारी ड्राइव हो रही है तो इट्स मेनली बिकॉज ऑफ FIIs फंड्स, एंड FIIs एक ही जगह पे फंड्स नहीं लगाते। FIIs worldwide they invest, right? Different ratio में हो सकता है, but looking at the international markets, you would get a cue about what is happening, right? So let's look at now DAX Germany and FTSE London, right? तो इसके चार्ट में हम काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे कि मार्केट वाज साइडवेज एंड एक कंसोलिडेशन से गुजर रहा था। कोशिश कर रहा था ये कि ये जो पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन हुआ करता था, जो अभी ग्रीन जोन है, वो नाउ इट हैज बिकम अक्यूमुलेशन जोन। इससे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन वापस से अगर आप देखेंगे तो डेक्स जर्मनी हैज वापस एंटर्ड विद इन द सेम जोन, बट the wick on the large wick on the downside of this candle clearly shows that जैसे ही लोअर लेवल पे आ रहा है तो बाइंग स्टार्ट हो गई यहाँ पे इन दीज फ्यूचर्स, राइट। तो दूसरा ये देखें तो ये 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है, दैट्स अ गुड साइन। गोल्डन क्रॉसओवर काफी टाइम पहले हो गया, सो वी कैन से साइडवेज का एक पैटर्न हमको यहाँ पे यूरोपियन मार्केट में दिखाई दे रहा है, राइट। सिमिलरली अगर हम डेक्स की बात करें, जो नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक ऑल्सो इज शोइंग द सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। अगर हम S&P 500 एंड डाउ जोन्स के फ्यूचर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो have a look at it, because these are the mother of all stock markets, right? These are the markets which are driving the world market. दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हैं ये, और not only the market but most wealthy people, cash rich people are investing in these markets, and since these markets may not be giving the kind of returns what they are looking at, so they are shifting the money from these markets to emerging markets, in which India seems to be one of the best markets today to the world, right? So that's where you see the FIIs fund flow is almost every day happening in our market, right? Now let's see the S&P 500 और DAX के डाउ जोन के फ्यूचर को हम देख रहे थे कि इसने पिछला जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन था फ्रेंड्स, वो ब्रेकआउट दिया था उससे, एंड उसके बाद में थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमने ऑब्जर्व किया था हायर लेवल पे, राइट। जो हमारा टारगेट था 30,000 का, वो ऑलरेडी अचीव हो गया था डाउ जोन्स में। एंड अगर हम S&P 500 की बात करें तो S&P 500 में हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था, राइट। बट लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज से अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यू वुड सी देयर इज अ सेलिंग प्रेशर। हाउएवर एट द एंड ऑफ द सेशन स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाती है, and this is the same thing what we are also observing in our markets also, right? Our markets are also in the morning they are bullish, उसके बाद में फिर नीचे गिरते हैं, और उसके बाद में हाई वोलेटिलिटी आती है, उसके बाद में बाइंग आ जाती है, राइट। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एज वेल। नाउ अगर हम MACD के हिसाब से देखें फ्रेंड्स, तो बियरिश क्रॉस ओवर है, तो बाइंग की स्ट्रेंथ नहीं उभर के आ रही है। सेकेंड, RSI के हिसाब से देखें तो दोनों 60 के ऊपर है, तो अनलेस अंटिल RSI 60 के ऊपर है तो बुलिशनेस तो यहाँ पे बनी रहेगी, और लोअर साइड में यू कैन सी देयर इज अ सपोर्ट जोन। सो आई कैन say there is a bullish bias, but the momentum थोड़ा कमजोर पड़ गया वर्ल्ड मार्केट्स में, right? And same thing is happening in our market as well. Now going back to Nifty and Bank Nifty chart, friends, so that we can see the intraday opportunity in Nifty. Let me open Nifty chart here, right? So it's taking few seconds. Meanwhile, we'll also look at the डेटा पॉइंट्स, राइट। ठीक है, ये चार्ट खुलने दें, तब तक हम डेटा पॉइंट्स को देखते हैं। डेटा पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें फ्रेंड्स, निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं, जो कि 17 दिसंबर को एक्सपायर हो रही है। 13,514 पे मार्केट क्लोज हुई, तो 13,500 विल बी आर एट द मनी।
एंड एट द मनी के आसपास में हम बुल्स और बियर्स ने क्या पोजीशन बनाई है वो देखें तो हमको एक क्लियर पिक्चर नजर आ रही है कि एट हायर लेवल पुट राइटिंग हैज नॉट हैपेंड, बट 13,500 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग हुई है. सो दिस एक्ट्स एज अ सपोर्ट 1 and support 2 is emerging at 13,400 friends, जहां पे 1.5 million contracts हैं, और अगर ये लेवल टूटता है तो 13,300 is emerging as our support level 3. इन बिटवीन जो ऑड स्ट्राइक प्राइस है वहां पे कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, राइट. तो 13,300 ऑन द डाउन साइड हमको यहाँ दिखाई देता है. अगर हम कॉल की साइड में बात करें फ्रेंड्स तो 13,500 में काफी कॉल राइटिंग हमको फ्राइडे को देखने को मिली, हालांकि उसके नीचे के लेवल पे अनवाइंडिंग हुई है, बट अनवाइंडिंग कोई खास मेजर नहीं है. तो अनवाइंडिंग नीदर पुट्स में हुई है नॉर कॉल्स में हुई है. पॉसिबली 2 दिन का थीटा गेन इनको डेफिनेटली मिलेगा सैटरडे संडे का. दैट्स व्हाई नोबडी हैज क्लोज देयर पोजीशन. एंड 13,550 itself is emerging as a resistance 1. यहाँ पे almost 1.1 million contracts हैं friends, and almost 2.4 million contracts हमारे 13,600 पे. So this will act as a resistance too. So 13,600 एंड 13,500 एक बड़ी छोटी सी रेंज नजर आ रही है इसमें अगर हम ऑप्शन चेन के पर्सपेक्टिव से देखें मंडे के लिए. बट अपर और लोअर साइड में येस ऑफ कोर्स देयर आर गुड कॉल राइटिंग have happened on the upper side, and lower side में put writing भी अच्छी खासी हुई है. So 13,700 could emerge as a very strong resistance on the upper side, but 13,650 पे भी 7 लाख contracts हैं. So 13,650 could be my upper level, and 13,300 to 13,400 could be my downside level, right? 13,400. तो ये लेवल मुझे फ्रेंड्स पीसी निफ्टी के ऑप्शन चेन से दिखाई दे रहा है. अगर हम इसके पीसीआर की बात करें तो पीसीआर इज 0.90, राइट. 0.90 पीसीआर है, जो कि हमारा न्यूट्रल टू नेगेटिव बायस दिखाता है. स्लाइटली वी कैन से दैट न्यूट्रल बायस दिखाता है ये, राइट. तो कुल मिला के मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में जाते हुए दिखाई दे रही फ्रेंड्स. अगर हम डेटा पर्सपेक्टिव से बात करें, एफआईआईज वर नेट बायर्स ऑन फ्राइडे एज वेल. 4,195 करोड़ की बाइंग की और नेट सेलिंग की है डीआईज ने, राइट. 2,359 करोड़ की ओवरऑल. अगर हम दिसंबर सीरीज की बात करें, एफआईआईज वर नेट बायर विद 26,926 करोड़, while as DIIs were net seller with a 18,626 crore. So FIIs are bullish. That's what is driving our market. अगर हम ऑप्शन की बात करें, FIIs are right now sideways हैं FNO में, and pros are sideways. Retailers are mildly bullish. अगर फ्यूचर की बात करें इंडेक्स में तो FIIs net long, pros are neutral. Retailers and DIIs at this point of time are net short in a इंडेक्स फ्यूचर्स. आरएसआई निफ्टी का अगर हम देखें तो 76 के आसपास में है. इंडिया विक्स 18.8% पे स्टेबल है. इन सच अ सिचुएशन अगर इंडिया विक्स 18.8, 19, 20 है तो दैट इज कॉल्ड स्टेबल. सो बुल्स के लिए काफी सुटेबल है. ऑल्दो जनरली इंडिया विक्स जो रहता है वो 12 से 14 के बीच में, 12 to 14 के बीच में वेरी करता है. दैट इज सपोज्ड टू बी अ हेल्दी इंडिया विक्स, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू कोरोना इट हैज ऑलरेडी शॉट अप, एंड फ्रॉम 86 नाउ इट हैज कम डाउन टू 18, 19. That's good part. Now market on a daily as well as on weekly is in a overbought zone. That's clearly indicated by various tools or various indicators. So in such a scenario you may expect corrections as well as consolidation. As long as Nifty 13,300 के ऊपर सस्टेन करती फ्रेंड्स, यू वुड सी 13,750 इज आवर टारगेट फॉर निफ्टी. अगर 13,300 के नीचे स्लिप करती है तो देन 12,600, 12,800 could be our target on downside for Nifty for the correction. And going back to our Nifty chart for intraday, let's look at how this is emerging on a smaller time frame, friends. So smaller time frame में अगर हम देखेंगे friends, you would see the phenomena what is happening right now in the market would be sell on rise.
right? So that means what? DIs are looking for the opportunity at higher level to book the profit, and FIIs are looking at the opportunity to buy at the lower level. And not only that, the retailers who have missed out the opportunity, they will be एंटरिंग द मार्केट जैसे ही मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट, अभी जैसे हमने सैटरडे को देखा तो मार्केट सॉरी फ्राइडे को देखा तो मार्केट करीब करीब 150 पॉइंट जैसे ही नीचे गई, सडनली बाइंग आई. सो दैट बाइंग वाज मोर और लेस इनिशिएटेड बाय FIs as well as retailers. So how would you play out in Nifty? अगर suppose करो Nifty में 13,650 या 13,600 के आसपास में मार्केट ओपन होती है, गैप अप, then you would see market would be going downside and that would be your shorting opportunity. और अगर मार्केट डाउन साइड में गैप डाउन के साथ में स्टार्ट होती है तो you would see at the 13,356 और 13,400 और 450 के लेवल पे बाइंग इमर्ज होगी. सो 13,500 से 13,550 के लेवल को ट्रेड न करें, दैट विल बी volatile and range bound level. Always look at the ORC. ORC अगर ये जोन में मार्केट खुलती है 13,500 से 13,550 के जोन में, तो ORC को देखें और ORC के ऊपर मार्केट को 15-20 मिनट के बाद में देखें कि क्या मार्केट अप साइड में और डाउन साइड में सस्टेन हो रही है. जिस भी साइड में मार्केट सस्टेन होए वो साइड में आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ में ट्रेड ले सकते हैं. एंड हायर साइड में जैसे जाए फ्रेंड्स, डू नॉट एक्सपेक्ट द निफ्टी टू गिव यू नाउ 70-80 पॉइंट्स. अगर आपको 25-30 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं तो यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स. निफ्टी की जो ट्रेंड लाइन है, जो असेंडिंग चैनल की रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, वो भी काफी क्लोज में है 13,600 के. सो यू विल सी दैट इंडेक्स विल लिटिल स्ट्रगल इन दिस जोन अनलेस अंटिल इंडेक्स डिसाइसिवली 13,600 के ऊपर जाए, स्विंग लॉन्ग न स्टार्ट करें. एंड सिमिलरली 13,400 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली शॉर्ट बनती है, या 13,450 के नीचे बियरिश बायस के साथ में जाता है तो 13,400 तक के लिए आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं. लुकिंग इन अ डेली चार्ट ऑफ निफ्टी फ्रेंड्स, यू वुड सी देयर आर डाइवर्जेंसेस विजिबल, सो यू नीड टू बी careful. These divergences can lead to the corrections, right? तो मैं काफी टाइम से ये मेरे हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि डाइवर्जेंसेस देखना बहुत जरूरी है. जब भी नेगेटिव डाइवर्जेंसेस हों, अगर आप लॉन्ग हो तो अपनी पोजीशन में पार्ट प्रॉफिट बुक कर लें या 75-80% पोजीशन में बुक करें, और जैसे मार्केट नीचे आएगी यू कैन री एंटर द मार्केट. Friends, I hope with this analysis you are able to make good profit. I really appreciate in some of the videos you are writing in the comment box that you are making good profit. I'm so happy about it, right? So मेरा objective है कि मेरी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है मैं उसको एक प्रोफेशनल सपोर्ट दे पाऊं, और जो कि पॉसिबल है इन वीडियोस के थ्रू. And do share these videos with your friends and trading communities. Friends, thank you very much for watching these videos. And do share these videos so that trading community can be reached out. There are many traders who are making losses for some or other reason, maybe because of the psychology or because of not knowing what are the trading ranges, right? Do keep an eye on option chain data, India VIX and USD INR during the intraday trades. And our trading range for Monday seems to be 13,400 to 13,650 for Nifty. The weekly range seems to be 13,000 to 13,800. So within this week, you can trade either one side, or I would suggest ऑप्शंस में स्ट्रेटजी लगा के ट्रेड करें. मतलब आप ऑप्शन बेचें भी और खरीदें भी, सच दैट आपको कम मार्जिन में आपको एटलीस्ट थीटा गेन हो ड्यूरिंग कंसोलिडेशन के टाइम पे. दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, right? Thank you once again for watching and liking the video, friends. Please share the video with your friends and trading communities. Signing off until the next video. Good luck, happy trading, happy investing.